जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी डियर स्टूडेंट्स, welcome to you people to another very chirpy, tweety, breezy and pleasant morning. I'm enjoying good health and hoping the same for you people. Dear students, yesterday when I was teaching my students learning grammar, I told them that there lies no doubt that you people are understanding the things very well that I'm trying to make you understand. You need to bear one thing in mind as well, that you people now are pretty equipped with the required knowledge that will make you help get through the exams you are going to sit in. But one thing that hampers you, that hinders you, that inhibits you, that obstructs you is fear. Oscillation, vacillation, pendulumization, hesitation, they are the offshoots of fear. You need to conquer your fear. That's the biggest hurdle, even enemy, that does not let you achieve what you want to achieve. You need to conquer your fears. Where there is a fear, there is your task. Where there is a fear, there is your task. Very well said by somebody. So look beyond the fears. Where lies your cherished goal and destination? And once you have conquered your fears, believe it, you win your targets. Even you are well equipped and you stay feared, you don't embrace what you want to embrace in the form of your destination goal. Even you are not that well equipped, much equipped with knowledge, and you have just got, even I say, smattering knowledge about certain topic, and you are pretty sanguine, you are pretty hopeful, you are pretty positive, and you know how to manage the things, because the clouds of fear are not hovering over your head that time, and you do Himalayan tasks, believe it. You do mammoth things, and you get unprecedented and exemplary success in this way. So dear students, conquer your fears which hamper you to embrace your cherished goal. Thank you.
So let's move to the board for our next lecture, that is faulty coordination and conjunctions. Faulty coordination and conjunctions. Dear students, coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions mean fanboys. Fanboys. Fanboys coordinating conjunctions stand for F for A, look, and, N, nor, B stands for but, O stands for O, or, Y stands for yet, S stands for so. Fanboys. They join words, phrases, or independent clauses of a sentence together. They join words, phrases, or independent clauses of a sentence together. अक्सर स्टूडेंट्स टुगेदर के स्पेलिंग गलत कर जाते हैं, तो मेरे पास I must say donkeys years ago I was teaching a class and I gave them a test, and a number of students of that class wrote the spelling of together wrong. TOGATHER उन्होंने लिख दिया। ये बड़ा एक नमोनिक है, जोकुलर बात है कि मैंने उन्हें फिर बताया कि डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद आप कभी भी टुगेदर के स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे, जस्ट बिलीव इट। आपने इसे टू गेट हर पढ़ना है। जब आप इसे टू गेट हर पढ़ेंगे तो आपके जहन में जो GATHER गैदर है, जिसके मानी इकट्ठा करना है, तो आप गलती नहीं करेंगे, आप टुगेदर को टू गेट हर पढ़ें। तो ये एक बड़ा अच्छा निमोनिक भी हुआ, और स्टूडेंट्स दे जस्ट couldn't help laughing on hearing this, and they just imbibed and digested, and they just saved that very mnemonic, and that sharpened their memory, and that sort of things are still staying in the memory, and when they come into contact they just recall that mnemonic of that time that happened many moons ago. Dear students, they often link similar clauses of a sentence together. They often link similar clauses of a sentence together. तो लिहाजा ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक फिक्रे के अंदर, और ये अक्सर एक जैसी जो क्लॉजेस होती हैं उनको लिंक करते हैं, यानी आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। ही ड्रोव हिज कार फास्ट, ही ड्रोव हिज कार फास्ट, कॉमा, फॉर ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग। यहाँ फॉर जो है डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैन बॉय है, इसको आप बिकॉज के मानी में लेंगे। एक तो देखें, मैंने एक के अंदर ही दो फॉर लगा दिए। ये वाला फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन है, लुक एट दिस वन। और ये फॉर जो है, जो फैन बॉय का है, इसके मानी बिकॉज है। और फैन बॉय से पहले हम पंक्चुएशन के रूल के मुताबिक हम कॉमा पुट करेंगे। लुक, ये मैंने कॉमा डाला। ही ड्रोव हिज कार फास्ट फॉर ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग। उसने अपनी गाड़ी तेज़ चलाई क्योंकि उसे अपनी मीटिंग के लिए ताख़ीर हो गई थी, देर हो गई थी। एक और एग्जाम्पल लें। ही वेंट टू द मीटिंग, कॉमा, लुक, कॉमा, एंड स्केच द फ्यूचर प्लान। ही वेंट टू द मीटिंग, कॉमा, एंड स्केच्ड अ फ्यूचर प्लान। तो डियर स्टूडेंट्स, फैन बॉयज, इनके बाद आपने कॉमा पुट करना है। नॉर देखें, मैं कहता हूं he
did not complete his homework. He did not complete his homework, comma, nor he came to school. He did not complete his homework, nor, इससे पहले कॉमा, nor he came to school. इस तरह बट के साथ देखें, the company offered him terms and conditions. The company offered him certain terms and conditions, comma, but he did not accept them. But से पहले कॉमा, क्योंकि फैन बॉय है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. The company offered him certain terms and conditions, comma, but he did not accept them. इस तरह डियर स्टूडेंट्स, और O stands for or. Drive your car carefully, comma, or you will repent later. Drive your car carefully, comma, or you will repent later. यहाँ और मीन्स वगरना, अदरवाइज, बसूरत दीगर, इसके माने हैं जी. येट, he was fallen into number of naughty problems, comma, yet he was quite optimist of attaining his target. He was fallen into a number of naughty, K-N-O-T-T-Y, naughty problems, comma, yet he was optimist of attaining, optimist, yet he was optimist for attaining his target. Sanguine, hopeful of attaining his target. So, dear students, yet के यहाँ मानी आप कह लें कि फिर भी, के बावजूद, despite, in spite of that, nevertheless, nonetheless. So dear students, it usually shows a consequence, a result. He worked laboriously. He burnt the midnight oil. He burned the midnight oil. So, comma, so से पहले, so he reached his destination. So he achieved his cherished goal. तो ये डियर स्टूडेंट्स फैन वॉइस और इनका इस्तेमाल अभी आपने देखा. आगे हम चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये कौन कौन से हैं? ये हैं डियर स्टूडेंट्स आफ्टर, बिफोर, आल्दो, इवन दो, बिकॉज, एज, इफ, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड दैट, यानी जिसके मानी हैं बशर्ते के, till, until, unless, when, once, as soon as, while, whereas. while, whereas कंपैरिजन के लिए भी है. They join independent clauses. Independent
ये मैं मुकम्मल कर दूं। Independent clause, they join independent clause which contains both subject and a verb and can act as a complete sentence। देखें, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर फाइल भी होता है, वर्ब भी होता है, और वो एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर स्टैंड कर सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट सेंस है। एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज, और ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को ज्वाइन करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज विच आल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, मगर वो एक मुकम्मल फ़करा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट रनिंग। आप देखें रनिंग, इससे पहले भी हम कॉमा पुट करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। ही वेंट रनिंग कॉमा ऑल्दो या इवन दो इट वॉज वेरी हॉट, वो भागने के लिए गया, जॉगिंग के लिए गया, बावजूद इसके कि बहुत गर्मी थी। She finished breakfast, comma, before she went to work. She finished breakfast before she went to work. तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी इसमें देखें, एक ख़ास तौर पे ये देखें कि until, unless ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, इनके बाद फर्दर नेगेटिव नहीं लगाते। मसलन he will not succeed, कॉमा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अब ये नहीं कहना आपने अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि अनलेस अनटिल ऑलरेडी नेगेटिव हैं। ही विल नॉट सक्सीड अनलेस से पहले कॉमा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, और वाइल और वेयर एज देखें, वाइल के बाद अमूमी तौर पर हमारा कंटिन्यूस टेंस होता है, और ये भी अमूमी तौर पर देखा गया कि वो पास्ट कंटिन्यूस होता है। द टेलीफोन रैंग, कॉमा, वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ, वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ। हैव अ बाथ होता है, टेक अ बाथ नहीं कहेंगे, हैव अ बाथ कहेंगे, दैट्स बेटर ऑप्शन। द टेलीफोन रैंग वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ। वेयर एज देखें, वेयर एज कंपेरिजन के लिए, she is a doctor, comma, whereas he is an engineer, whereas he is an engineer। तो ये डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने एग्जाम्पलीफाई किया, चंद मिसालें मैंने आपको दी, इनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये। जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अच्छा, इसके बाद हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ गई। एडवर्बियल कंजंक्शंस, एडवर्बियल कंजंक्शंस देखें, एडवर्बियल कंजंक्शंस ये हमारी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्ट करते हैं, ये भी बताता चलूँ। जैसे देखें, मैं कहूँ he completed his task with great devotion। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सेमीकोलन आएगी। ही completed his task with great devotion, सेमीकोलन। therefore he won the first prize। अब therefore से पहले डियर स्टूडेंट्स सेमीकोलन, सेमीकोलन देखें, ये सेमीकोलन, और therefore के बाद कॉमा, इसे एडवर्बियल कंजंक्शंस कहते हैं। तो अगर अब आप देखें
एक कंजंक्टिव क्लॉज। अब कंजंक्टिव क्लॉज की ज़रा पोजीशन देखें, इसमें हम देखें पोजीशन वाइज मैं कहता हूँ, अगर फ़िक्रा हम इससे शुरू कर देते हैं, जैसे हमारे पास एडवर्बियल कंजंक्शंस हैं, मैं कहता हूँ देयरफॉर, हम शुरू कर रहे हैं इससे देयरफॉर। अब ये कंजंक्टिव क्लॉज है, देयरफॉर कॉमा, देयरफॉर ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद हिज लॉट। देयरफॉर लिहाजा वो अपनी किस्मत पे बिल्कुल मुतमईन था। देयरफॉर कॉमा ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद हिज लॉट। यहाँ देयरफॉर के बाद हम कंजंक्टिव क्लॉज में कॉमा डाल देंगे। इस तरह देखें, इसी को हम ले जाते हैं यू कॉमा देयरफॉर कॉमा गॉट लेट फॉर द मीटिंग। ये डियर स्टूडेंट्स कंजंक्टिव क्लॉज। अब हम इसमें यू के बाद कॉमा, देयरफॉर के बाद कॉमा और आगे गॉट लेट फॉर द मीटिंग। तो ये हमारे पास एडवर्बियल कंजंक्शंस होते हैं। तो इनको हम इस तरह डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देयरफॉर, बिकॉज एट्सेट्रा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, कोरेलेटिव कंजंक्शंस। कोरेलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्बियल कंजंक्शंस के बाद कोरेलेटिव कंजंक्शंस, आइदर followed by or। Either you or your friend is at fault। Either you or your friend is at fault। इसमें हम वर्ब जो है वो नीदर के साथ एग्री करवाएंगे। अब देखें और के बाद क्या है, योर फ्रेंड सिंगुलर है, तो हमने अकॉर्डिंगली वहाँ इज़ कहा। आइदर यू और योर फ्रेंड इज़ एट फॉल्ट। इस तरह नाइदर में देखें, नाइदर फॉलोड बाय नॉर, नॉर नाइदर, नाइदर यू नॉर आई एम हैप्पी इन दिस मैटर। अब इसमें भी नीदर वाला रूल है। अब नॉर के करीब देखें आई है, तो अकॉर्डिंगली हमने उसके साथ उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम लगा दिया। नाइदर यू नॉर आई एम हैप्पी इन दिस मैटर। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे वेदर और, वेदर और, यू विल हैव टू बिलीव इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। यू विल हैव टू बिलीव इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो, दो फॉलोड बाय येट। दो ही इज पुअर yet he is honest। Though he is poor, yet he is honest। Such followed by as, he is such a boy, he is such a boy as met me yesterday। इसमें आपको देखें as उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि who लगेगा कि who ठीक है, जबकि सच फॉलोड बाई एज। ही इज सच अ बॉय एज मेट मी येस्टरडे, एज मेट मी येस्टरडे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है सेम फॉलोड बाई एज। दिस इज द सेम स्टोरी, दिस इज द सेम स्टोरी एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी। दिस इज द सेम स्टोरी एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी। सेम दैट भी होता है डियर स्टूडेंट्स। This is the same place that I have already visited। This is the same place that I have already visited। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है हार्डली, स्केयर्सली फॉलोड बाई व्हेन। हार्डली, स्केयर्सली फॉलोड बाई व्हेन, जिसके मानी हैं बमुश्किल ही, बमुश्किल ही। स्केयर्सली हैड वी रीच्ड the picnic point when it started raining। Scarcely had we reached the picnic point when it started raining। ये पुराने एक एंट्री टेस्ट का जुमला है मेडिकल का।
MCAT का। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम वर्ब इन्वर्जन भी करेंगे, यानी स्केयर्सली के फौरी बाद इस फिक्रे का वर्ब आ जाएगा इन ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस स्ट्राइकिंग एंड अनयूजुअल। Scarcely had we reached the picnic point when it started raining। जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरह देखें, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, इसके साथ भी हम वर्ब इन्वर्जन करेंगे। नॉट ओनली इज शी अ ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट गर्ल। Not only is she a beautiful but also intelligent girl। अब देखें, मैंने इंटेलिजेंट से पहले आर्टिकल एन पुट नहीं किया, क्योंकि सिंगल आर्टिकल फॉर सिंगल पर्सन, डबल आर्टिकल्स फॉर डबल पर्सन्स। तो इनके साथ डियर स्टूडेंट्स वर्ब इन्वर्जन करते हैं। बताता चलूँ कि कर लें भी ठीक है, ना भी करें ठीक है। वैन ही इस तरह हार्डली के साथ, वी हैड हार्डली रीच्ड द पिकनिक पॉइंट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वी हैड हार्डली इस तरह भी कर सकते हैं, वर्ब इन्वर्जन भी कर सकते हैं इसके साथ। वी हैड हार्डली रीच्ड द पिकनिक पॉइंट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। शी इज़ नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट गर्ल। वर्ब इन्वर्जन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। She is not only a beautiful but also intelligent girl। इस तरह डियर स्टूडेंट्स बोथ, बोथ फॉलोड बाई एंड, बोथ के साथ हम एंड लाएंगे। मसलन बोथ, बोथ सलीम एंड नासिर, बोथ सलीम एंड नासिर have not come today। both Salim and Nasir, और नहीं होगा, both followed by and, both Salim and Nasir have not come today। जी डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, जिसमें के अंदर हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एडवर्बियल कंजंक्शंस, और हमारा अभी लेक्चर चल रहा है कोरेलेटिव कंजंक्शंस। यहीं से हम नेक्स्ट सिलसिला जोड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, इफ़ इट इज़ देयर, आई एम हियर टू क्लैरिफाई, एंड यू पीपल आर ओपन to give your comments if you face any problem. I'm here to demystify and clarify it. So keep remembering me in your prayers. Thank you. Subscribe my channel more and more, and ask your near and dear ones as well, so that they may be benefiting, they may be benefited the channel, and it is to ignite the candle of the torch of knowledge imparted to me by my worthy, estimable teachers. So I'm just trying to scatter and spread that very beacon and light of knowledge further ahead. So just keep it subscribing, sharing, and like my channel as well more and more. The saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him,
तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नबवी है कि तुम में से बेहतरीन इंसान है, देखें बेहतरीन कहा गया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नफ़ा पहुंचाए। तो कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो किसी के लिए मुफीद हो जाते हैं। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का आला और फा मकसद होना चाहिए कि हमारा वजूद दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हो, नऊज़ बिल्लाह, ना कि नुकसानदेह हो। बेहतरीन वे ऑफ लाइफ है ये कि आप दूसरों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो फ़ायदा कर जाएं। नुकसान करना तो दरकिनार, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen summa ameen. Till next, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.